Assalamu alaikum. How are you all? It's me Mubashir Ahmed and it's second year class. Today we are going to shift our discussion towards the grammar portion of the unit that we have covered so far. We were discussing something about archaeological treasures of Pakistan and we came up with the descriptions of multiple sites in Pakistan that contributed to the archaeological study. So now we are going to discuss the exercise portion, and our exercise portion begins with the discussion of figures of speech. Before discussing different figures of speech, it is very much important for all of us to comprehend the idea of figures of speech. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना कि figures of speech हम कहते किसे हैं. Figures of speech जो है, it is actually a departure from an ordinary form of speech. What do we actually mean by this? A departure from an ordinary form of speech. The speech, the spoken version of our expressions on daily basis is different and figures of speech are different. जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत करते हैं, गुफ्तो शनीद करते हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. Now where do we actually use these figures of speech? That is $1 million question. We use these figures of speech in literature, in poetry, even in prose in order to achieve the maximum effect, poetic effect, prosaic effect, literary effect. ये जो तमाम figures of speech हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल करते हैं पोइट्री में, प्रोज में, ड्रामा में, नॉवल में. और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन फिगर्स ऑफ स्पीच के इस्तेमाल से हम एक ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट हासिल करते हैं या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे. दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग. They are completely different. They are not, you can say, going to be confused with the general notion of speech that we carry out on day-to-day basis, on daily basis. रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. इसमें बाज़ औक़ात बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम एक जैसी कर देते हैं और उसका असल में एक मकसद होता है that we want to achieve a particular effect. तो one by one we will start discussing the different figures of speech. The very first one, जो सबसे पहले हमारे पास एक figure of speech है, that is simile. Now what is a simile? Simile is the very first figure of speech that we are going to discuss. Simile is actually a comparison drawn between two completely different things, people and objects. Now, if you look at this, if you look at the whiteboard, comparison drawn between two different things, people and objects, what does it indicate? It indicates that we compare two dissimilar things with the help of like as so. For example, मैं कहता हूं, let's say he is as brave as a lion. He is as brave as a lion.
तो यहां पर what am I trying to do? I am trying to compare two different things with the help of as. मैं ये भी कह सकता हूं he is like a lion. वो शेर की तरह है. So what am I trying to do? I am trying to compare a human with an animal. Why? Because this human is having a quality of bravery that is typical of a lion. मतलब बहादुरी का ये जो एलिमेंट है ये इस इंसान में भी पाया जाता है और शेर में भी पाया जाता है. तो उस एक क्वालिटी की बुनियाद पर मैं क्या कर रहा हूं? I am trying to compare a human with an inhuman object or thing or a person or an animal. So this is something that you can do. Simile के लिए the basic requirement is that there must be at least one quality that's similar in both the things that you are trying to compare. मतलब जो दो चीजें या दो लोगों को या एक शख्स को किसी जानवर के साथ कंपेयर करते वक्त आपको एक चीज का ख्याल करना पड़ता है कि that you need to know that there is at least one quality that's similar in both the things, both the people, both the objects. इसका आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है. The next figure of speech that we are going to discuss is metaphor. Metaphor. What do we mean by metaphor? Metaphor is actually an implied simile. Now, implied simile का मतलब क्या है? Metaphor and simile are almost the same with one exception, and that is that in simile we use like and as. In metaphor we don't use like and as, rather we compare the two dissimilar things without using like and as. मतलब कि हम जब simile का इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम कहते हैं कि that he is like a cheetah, तो मतलब ये चीता की तरह है, that is simile. लेकिन अगर मैं कहूं कि he is a cheetah like this, he is a cheetah, तो अगर मैं ये कहता हूं it means that I'm not trying to compare something, rather a direct comparison is made without using words like and as. So यहां पर अगर आप देखें I am giving a complete package. यहां पर मैं ये like का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं as का इस्तेमाल नहीं कर रहा, rather मैं क्या कह रहा हूं कि वो चीता है, वो चीता है. He is a bookworm. वो किताबी कीड़ा है. अगर मैं ये कहता हूं कि वो किताबी कीड़ा है, that is metaphor. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं that he is like a bookworm, तो ये जो आपकी कंपैरिजन ड्रॉ हो रही है यहां पर, that is your simile. ये जो आपकी कंपैरिजन ड्रॉ हो रही है that is metaphor. Metaphor में आप क्या करते हैं? What you actually do, you carry out a direct comparison between two dissimilar things with one quality similar at least. In simile, what you actually do, that you try to compare two different things with the help of words like this, like and as. तो जहां पर like का इस्तेमाल हो, as का इस्तेमाल हो, that is your simile. लेकिन जहां पर इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो और डायरेक्ट कंपैरिजन हो, that is your metaphor. So इसमें आपने क्या करना है? In simile and in metaphor, that you need to know one thing, that in simile you use words like and as, and in metaphor these words are never used. Rather you draw a direct comparison. तो direct comparison हम करते हैं
मेटाफर में, सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इस डिफरेंस का आपको बड़ा ख्याल करना है that where do we have to distinguish and differentiate between simile and metaphor. Now we are going to shift our discussion towards the next part, figures of speech. The next we have the next figure of speech, that is personification. Now what is personification? Personification is yet another figure of speech in which an inanimate object, idea, abstract notions or something that is not human is given a humane quality. For example, एक ऐसी चीज जो कि इंसान ना हो, for example chair, door, idea हो, abstract idea, notion कहते हैं idea को. What do you mean by notion? Ideas, concept. इनको ह्यूमनली क्वालिटीज देना, किसी आइडिया को, किसी इनह्यूमन ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जो कि इंसान ना हो, उसको जब हम पर्सोनिफाई करते हैं एज ह्यूमन, that is personification. You would find such type of personifications in poetry, even in the prose, even in the fables. फेबल जो है एक शॉर्ट स्टोरी को भी आप कह सकते हैं जहां पर हम एनिमल्स को कैरेक्टर्स लेते हैं। तो एनिमल भी हमारे पास ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन उसको क्वालिटी दी जाती है ह्यूमन की। ये आपकी स्पेलिंग है फेबल्स की, फेबल्स। दिस इज फेबल। फॉर एग्जाम्पल इन फेबल what is the characteristic of a fable? In a fable we are having animal characters, and these animal characters are given human qualities. For example, let's say we are having a rat, cat, cow, dog. All these are different animals, and these animals perform in the story like animals. For example, the cat, he is expressing anger, he is expressing different dialogues, he is, you can say, eating, he is dancing, he is visiting a friend, he is partying with someone. Same goes for other animals. He is performing all the humanly activities. So all these humanly activities that are mostly or all the time performed by a human are performed by animal characters. That is a fable, and a very typical perfect example for personification. Personification में होता क्या है कि आप यही ह्यूमनली क्वालिटीज जो है उन चीजों को देते हैं जो कि इंसान नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं that the chair was angry at the door or the door was angry at the man, और अगर मैं कहता हूं that the table was crying, the marker was dancing, the whiteboard was singing. So all these different are personification examples. अगर मैं आपसे कहूं that this marker was dancing, you won't believe it, I won't believe it, but it is actually personified now. This particular object has been attributed with humanly qualities. गुस्सा करना, नाचना, बात करना, रोना, खाना, पीना, ये क्या है? All these are different personification examples. आप देख लें कार्टून्स में टॉम एंड जेरी इज अ कार्टून, ठीक है, जेरी इज टॉकिंग, टॉम इज टॉकिंग, ये क्या है? ये personification है। They are animals, but they have been given, they have been attributed with humanly qualities. ये सारी चीजें, all these different instances are actually typical examples of personification. मैं ये कहता हूं, let's say the cat was attempting his
paper, now this particular attempting his paper portion, this portion is actually a quality that can only be done, that can only be carried out by a human. But this particular characteristic has been given to something that is inhuman, that is an animal. तो एक जानवर को वो क्वालिटी दी जाती है जो कि इंसान को होती है, that is personification. हम कहते हैं ना, ideas are floating. ये भी personification है. How can an idea float? But it is a form of personification. मैं कहता हूँ ना, my ideas are quite angry at me, or my ideas are upset with me. मैं ये भी कह सकता हूँ, my mind is upset with me. मेरा दिमाग मुझसे खफा है. अब दिमाग मुझसे कैसे खफा हो सकता है? लेकिन मैं एक्सप्रेस क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा. तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? My ideas are upset with me. This is something we can relate with the concept of personification, where you give humanly qualities to inhumane objects. Now, the next figure of speech with us is apostrophe. अब apostrophe क्या है? What is apostrophe? It is another figure of speech in which there is a direct address to the dead, somebody absent, or a personified thing. इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट एड्रेस, मुखातिब होना टू समबडी हु इज डेड, जिंदा ना हो या उस वक्त पर मौजूद ना हो, या एक ऐसा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट जिसको आपने पर्सोनिफाई किया हो. वो कोई भी चीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ओ चेयर, काइंडली रेज योर वॉइस. अब ये देखें ना, मैं कहता हूं ना, ओ चेयर, ट्रस्ट दाई सेल्फ. ये एक एग्जाम्पल है. ओ चेयर, ट्रस्ट दाई सेल्फ. अब चेयर को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने आप पर यकीन करो. दाई सेल्फ, योर सेल्फ. ओके, इसका मतलब है yourself. It means that I am addressing a personified object, thyself. हम बाज़ औक़ात when we are fed up and exhausted with the current state of affairs, where we are frustrated at the different activities and occurrences on day-to-day basis, हम जब काफ़ी थक जाते हैं, हम कहते हैं ना कि यार कायद-ए-आज़म तुमने पाकिस्तान को क्यों आज़ाद करवाया? ठीक है ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया. जब हम गिले शिकवे शुरू करते हैं पाकिस्तान से, हम कहते हैं ना, ओ कायद-ए-आज़म तुम्हें पाकिस्तान हासिल करने की क्या जरूरत थी? कायद-ए-आज़म is not present. He is dead long ago. Even then we are directly addressing him. So he is dead. Even then we are addressing him. That is apostrophe. वो शख्स जो मर चुका है उसको मैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं. तो इसका क्या मतलब है? I am using a figure of speech, and that figure of speech is apostrophe, personified object. अब एक शख्स मौजूद ना हो, उसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं. For example, if somebody is not around and you address him in his absence, so that is also one of the typical examples of apostrophe. Apostrophe में क्या होता है कि आप या तो किसी मुर्दा को या उस शख्स को जो मौजूद ना हो, या कोई ऐसी चीज जिसको आपने पर्सोनिफाई किया हो. फॉर एग्जाम्पल, आई से, ओ माई बैग, यू आर टू हैवी. नाउ इफ यू लुक एट दिस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर बैग दैट ही विल रिस्पॉन्ड टू यू? आप अपने बैग से, अपने
बस्ते से कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको जवाब देगा? वो आपको जवाब नहीं देगा. Even then I am addressing it. Now we use these different figures of speech in literary text in order to achieve a particular effect. Now, how do we achieve this? Why we achieve this? It depends on the nature of the text, that what is the particular purpose and object of that text. So, for that matter, you need to realize one thing, that all these different figures of speech are used in literary text as part of the literary devices. So literary device का क्या मतलब है? Literary device का मतलब है कि मैं ये डिवाइस इस्तेमाल करता हूँ एक खास किस्म का इफेक्ट हासिल करने के लिए. लिटरेचर में क्या होता है कि हमारे पास दो मतलब होते हैं. एक होता है सरफेस मीनिंग, एक होता है डीप मीनिंग. Now this is something apparent, which means जाहिर. ये जो surface meaning होता है इसका आपको पता कैसे चलता है? When you read a text, you understand the meaning. Whatever you see apparently on the surface, that is your surface meaning. What is deep meaning now? Deep meaning is achieved with the help of figures of speech. A writer, a poet at his discretion uses figures of speech in order to convey the deep meaning. This deep meaning is something hidden. That is not apparent. मतलब ज़ाहिरी तौर पे मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मेरे बातिन में क्या चल रहा है, nobody knows. So this is something that you need to understand, and you try to understand. The writer uses multiple different figures of speech in a literary text in order to achieve this deep meaning. इस deep meaning का मतलब जानने के लिए एक पोएट, खास तौर पे पोएट या प्रोज राइटर, नॉवल राइटर इन डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है ताकि वो अंदाजा लगा सके about the different hidden meanings that the writer wants to convey. ये आपको पता करना है कि why we use apostrophe, why we use oxymoron, why we use irony, why we use simile, why we use metaphor. We use all these different devices with an aim to achieve the maximum effect. वो मैक्सिमम इफेक्ट होता क्या है? या तो एक मैसेज कन्वे करना है, या जो जाहिरी मतलब है उसका इस्तेमाल करके उसके जरिए हम डीप मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर अगर आप देखो तो एपोस्ट्रोफी में हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा करते हैं या किसी ऐसे शख्स को मुखातिब करते हैं जो कि जिंदा ही नहीं है. अब जरूरत तो नहीं है कि हम एक मुर्दा को वो करें, लेकिन हम करते हैं. वजह क्या होती है कि that there is a particular message that the poet wants to convey with the help of it. Now इसके बाद जो दूसरा है that we try to convey the meaning with the help of somebody who is not present. वो भी एक तरीकेकार है. उसके बाद there is yet another logic that you try to convey the message with the help of a personified object. आप किसी personified object की तरफ इशारा करते हैं. अगर मैं इसे कहूँ oh white board you are too filled up, अब ये भी एक बात है. अब इसको क्या पता चलता है कि मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन even then I'm trying to use this figure of speech. So all these different devices are used in a text in order to achieve maximum amount of effect. I hope you would have understood these figures of speech, and I would request you all to go through them, revise them, and try to get hold of them. Till then, to the next class, we'll see each other inshallah.